अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू एन अदर क्लास, चैप्टर नंबर 1, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री. We are going to study today the second part of substance, which is compound, page number 7 and 8 of your textbook. What is compound? It is that part of a substance in which we mix two elements together chemically in a fixed ratio by mass. What does it mean by? Let's take the example of water, which is a compound. To make water, we require 2 hydrogen and 1 oxygen. So this specific quantity which is required to make water is called as the fixed ratio by mass. ये जो स्पेसिफिक क्वांटिटी हमें वाटर बनाने के लिए चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की, कि हमें 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन चाहिए, द एलिमेंट्स, दिस इज नोन एज फिक्स्ड रेशियो बाय मास. और जब हम इस फिक्स्ड रेशियो को आपस में कंबाइन करेंगे केमिकली, वी गेट कंपाउंड. जब कंपाउंड बनाते हैं, द एलिमेंट्स जिनसे ये मिलके बना है, इट लूज देयर प्रॉपर्टी, यानी कि हाइड्रोजन इज अ गैस, सिमिलरली ऑक्सीजन इज ऑल्सो अ गैस. When we mix them together, we get a liquid, a totally new property. Similarly, they lose the elements lose their property and entirely new thing is formed जिसकी properties totally different होंगी. And we cannot break this water into its constituents by physical methods. Physical methods जैसे कि आप कहें कि evaporation के जरिए से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करते, it's not possible. मैग्नेट के जरिए से आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दे, it's not possible. So these type of methods are known as physical methods. So we cannot divide or we cannot break a compound into its components by simple physical methods. Let's see it with an example. So to make water, we require hydrogen and oxygen. Both hydrogen is a gas, oxygen is also a gas, and we get water, which is a liquid. So in this case, we require 2 hydrogens and 1 oxygen atom, which combine together to form water. So this is their fixed ratio. Let's take another example. So in case of water, the fixed ratio by mass, we require 2 hydrogens and 1 oxygen. Now multiply them with their mass. The mass of hydrogen is 1 and that of oxygen is 16. We will learn this in detail in our next topics, what is atomic mass. So for today you learn these examples. Okay, hydrogen has atomic mass of 1 and oxygen has atomic mass of 16. Multiplied by their ratios, we get 2:16. And by simplifying them, 1:8. This is the fixed ratio by mass. mass के साथ इनकी क्या रेशियो है? इतनी रेशियो में जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को आपस में मिक्स करेंगे, we will get water, a compound. Similarly, carbon dioxide, 1 carbon and 2 oxygens. Multiplied by their mass, carbon has atomic mass of 12 and oxygen 16. Multiplied by their ratios number, we get 12 and 32. Simplifying them, 3:8. It means if we mix the 3:8 of carbon and oxygen by their mass, we will get carbon dioxide. A compound can be ionic in nature, जैसे कि सोडियम एटम. हमने एक रूल पढ़ा था इन आवर लास्ट लेक्चर ऑफ वैलेंसी कि जब भी किसी एटम के लास्ट शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स. जैसे कि यू कैन सी द सोडियम हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स लास्ट शेल, सो इट मीन्स इट विल लूज इलेक्ट्रॉन. सो आफ्टर लूजिंग इट विल गेट अ पॉजिटिव चार्ज, Na positive. Similarly, another one, chlorine. It have 7 electrons in its last shell, 2, 2, 4, 2, 6 and 1, 7. और अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर किसी एटम के लास्ट शेल में 5 या 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इट विल गेन इलेक्ट्रॉन्स. सो इट विल गेन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म अ Cl नेगेटिव आयन.
And we also know that opposite charges always attract each other. The positive and negative charges attract together and a compound is formed which is ionic compound. So these type of ionic compounds ये अकेले कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते. NaCl कभी भी अकेले इस फॉर्म में नहीं रहेंगे. बहुत सारे NaCl के मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे NaCl के कंपाउंड्स आपस में मिलकर खुद को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अरेंज करेंगे. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं. यू कैन क्लियरली सी one sodium atom is being bonded with 6 chlorine atoms. 1 chlorine, 2nd chlorine, 3rd chlorine, 4th chlorine, 5th chlorine and 6th chlorine. Total 6. सिमिलरली आप जिस किसी को भी यहाँ पर देखेंगे, जिस किसी भी एटम को, तो वो हर एक एटम, हर एक आयन टोटल 6 दूसरे आयन्स के साथ सराउंडेड है. सो इट मीन्स ये एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. एज यू कैन क्लियरली सी इट्स 3 साइड्स. So what are ionic compounds? They are made up of positive and negative charges. जैसे कि NaCl के केस में Na positive and Cl negative ions. और ये कभी भी अकेले आपको नहीं मिलेंगे. They will always form a crystal. They will always form a 3-dimensional structure. जैसे कि घर में हमारे नमक आता है. It is always in the crystal form. Each ion is surrounded by opposite charge ions. तो वो हमने पीछे देखा कि sodium ion was surrounded by 6 chlorine ions. And it is very difficult to break them because they have very strong force of attraction between them. Ionic compounds को चूंकि तोड़ना बहुत मुश्किल है, इतने ज़्यादा ions को अलग अलग करना difficult है, that is why they will have high melting point and boiling point. And we represent the ionic compounds by specific formulas known as formula units. हम जैसे कि ions को, elements को हमने represent किया था symbol से, वैसे ही कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे आयनिक कंपाउंड्स को फॉर्मूला यूनिट से. जैसे दो चीजों से मिलकर बना है NaCl, सो Na and Cl we are representing them together. Similarly KBr, potassium bromide. Covalent compounds. Covalent compounds जैसे कि water, they will exist only in their molecular form. यानी कि ये वाटर आपको इस तरह से अकेला इजीली मिल जाएगा. इसको और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर या कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं. सो वी सिंपली रिप्रेजेंट देम बाय देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. H2O, similarly H2SO4 and many other. This is some common compounds with their formula. You must learn all of these. These are important for MCQs. Common salt NaCl, sand which is known as silicon dioxide. Silicon, Si, di means 2, oxide means oxygen, so SiO2. Sodium, Na, hydro mean hydrogen and oxide mean oxygen, so NaOH. So similarly there are many other examples, so must learn all of these examples by heart. So this is for today's lecture, compound, its definition, and in paper it will come define compound. Similarly they will ask about why ionic compounds have high melting and boiling point. So for that you will answer this from here till here. ठीक है? Ionic compounds have high melting and boiling point. क्यों? Because they have strong forces of attraction between them. And this table for MCQs. That is all for today. I hope you have learned better. Thank you and Allah Hafiz.